Hello and welcome back. I am Vaishali Upadhyay from APS Haldwani, Lamachor. Today we are going to start our new worksheet 5, and the name is No Place for Us. Chapter 18. In this, I have already made the whole chapter video, which you can see in my YouTube channel Universal Facts by Vaishali Upadhyay. In this video, I am giving you the worksheet, but if you want to see the whole chapter, then you can subscribe my channel, and with the help of subscribing you can see the whole chapter in my YouTube channel. So let's start with the first exercise of this worksheet. And the first exercise is fill in the blanks. So let's start. Our first one is Jethria was born in dash village. So what's come here? It come Khedi village. Okay. Jethria was born in Khedi village. Jethria जो था वो कहाँ बोर्न हुआ था? खेदी गांव में, खेदी विलेज में. Okay. Now our second one is people of Sinduri call them means who? Jethria's family. Okay. What they called? It called unwanted guest. Okay. People of Sinduri called Jethria's family. जो सिंदूरी के लोग थे, we have learned in the chapter कि जो सिंदूरी के लोग थे वो जैत्रिया की फैमिली को क्या बोला करते थे? दे कॉल्ड अनवांटेड गेस्ट, यानी कि अनचाहे मेहमान. ठीक है, तो वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो उन्हें अनवांटेड गेस्ट कहा करते थे. राइट. नाउ our third one is Jethria Bhai moved from dash to dash, and from there he moved to dash. Now what comes in dash? In a first dash it come Khedi, second dash Sinduri, and the last dash is Mumbai. Now what is the meaning? See this. Jethria Bhai moved from Khedi to Sinduri. क्या हुआ था? In a firstly, where Jethria and their Jethria's family lived, they lived in Khedi. But after, due to some problems, they shifted where? They shifted to Sinduri. क्या हुआ था? खेदी में उनके जो एंस्टर्स थे वो सब खेदी में रहते थे. राइट. बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स होने की वजह से दे ऑल शिफ्टेड टू सिंदूरी. वो सिंदूरी में शिफ्ट हो गए थे. पूरा जो गांव था वो कहाँ शिफ्ट हो गया था? सिंदूरी में. एंड फ्रॉम देयर ही मूव्ड टू मुंबई. And after some time, because Sinduri peoples were not accepted, खेदी peoples जो खेदी से आए हुए थे सिंदूरी में, उन्हें वो क्या नहीं कर रहे थे? एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे. So due to some problems, they afterwards they all shifted to Mumbai. ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से वो सभी लोग फिर सिंदूरी से कहाँ शिफ्ट हो गए थे? दे मूव टू मुंबई. वो मुंबई चले गए थे. सो फर्स्टली दे लिव्ड इन खेदी, सेकेंड दे शिफ्टेड इन सिंदूरी, एंड एट लास्ट दे गॉन टू सिटी वेयर? इन मुंबई. ओके. नाउ आवर फोर्थ वन इज अ
big wall built across the river is called a dash. Now what comes in dash? अब क्या हुआ था? It comes, what comes in dash? It comes dam. क्या हुआ था? You have seen in the village because they were building a big wall across the river. River के across में वो क्या कर रहे थे? They were building a वॉल, एक वॉल बनाई जा रही थी, ठीक है। और वो वॉल क्यों बनाई जा रही थी? जिसे वो मतलब उस वॉल को क्या बोलते थे? दैट वी कॉल्ड एज डैम। उस गांव में, किस गांव में? इन खेदी, सम पीपल्स वर building a dam, and because of the dam the people of Khedi village, they left Khedi and they moved to सिंदूरी। तो उस गांव में रिवर में क्या बनाया जा रहा था? डैम बनाया जा रहा था। तो डैम बनाने की वजह से जो खेदी के लोग थे वो धीरे धीरे कहाँ शिफ्ट हो रहे थे? सिंदूरी में। ओके, नाउ our last and fifth one is the only dream of Kshatriya Bhai was to send his children to dash. Now what come in dash? It comes school. The only dream of Kshatriya Bhai, Kshatriya Bhai का सिर्फ एक सपना था। and what was the dream? The dream is to send their children to school, कि अपने बच्चों को in future वो अपने बच्चों को कहाँ भेज सकें? स्कूल भेज सकें, right? So with this we have completed our 5 fill in the blanks. Okay, now we will discuss our next exercise. Now our next exercise is write true or false. Now see the first one. Our first one is Kshatriya Bhai had a family of distant relatives in Mumbai who helped them to settle there. So is it true or false? See, the answer is true. Why? Because Kshatriya Bhai had a family of distant relative. उनकी वहाँ क्या थे? Where they are living? Where they are living? They are living in Mumbai. So Kshatriya Bhai, who lived in Mumbai, had a distant relatives. ठीक है? So मतलब जो distant relative थे, they are the relatives who helped them to settle there. उन्होंने क्या करी थी? उनकी हेल्प करी थी मुंबई में सेटल होने के लिए, राइट? सो दैट इज ट्रू. नाउ our second one is there was hills and jungles near Khedi village. So is it true or false? The answer is true. Why? Because if we talk about Khedi village, we have seen that lot of hills and jungles near Khedi village. You have learned in the chapter, right? I told you when I have made the video, I have explained about Khedi village, how it was. It was covered with forest, okay, and the peoples of Khedi village, they loved Khedi village because everywhere they can see the hills and jungles. So the answer is true. Now see the third one. The third one is Kshatriya Bhai had to shift from Sinduri to Khedi. Now what they were saying, is it true or false? That is false. Why it was false? Because as you know, Kshatriya Bhai
had to shift from Khedi to Sinduri, not Sinduri to Khedi. क्या हुआ था? चैत्रिया भाई कहाँ से शिफ्ट हुए थे? फर्स्टली दे ऑल वर लिविंग इन खेदी विलेज एंड आफ्टर मेकिंग अ डैम दे ऑल वर शिफ्टेड टू सिंदूरी. तो खेदी से सिंदूरी में शिफ्ट हुए थे, ना कि सिंदूरी से खेदी में. सो द आंसर इज फॉल्स. नाउ see the fourth one. Our fourth one is in Khedi, people did not fall sick often. So that is true or false? The answer is true. Why? Because in Khedi people did not fall sick. वो कभी भी मतलब जो खेदी विलेज था वहाँ के लोग कभी भी बीमार नहीं पड़ते थे. बेसिकली बीमार तो हर कोई पड़ता है, लेकिन बीमार अगर वो पड़ भी जाते थे तो वो क्या करते थे, जो हर्ब्स होती थी और जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती थी, ठीक है, जो फॉरेस्ट से जो प्लांट्स वगैरह निकाल के जो मेडिसिन्स वगैरह बनाई जाती थी, उससे वो अपने आप को ठीक कर लेते थे. उन्हें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. तो बेसिकली दे डिड नॉट फॉल, वो कभी भी बीमार नहीं पड़ते थे बिकॉज ऑफ द फ्रेश इन्वायरमेंट. दैट इज़ वाई द आंसर इज ट्रू. नाउ सी द लास्ट वन, फिफ्थ वन. फिफ्थ इज roofs made of tin keep houses cool in summer. So what is the answer? That is true or false? The answer is false. Why? Because always we have seen if the roof is made up of tin, ठीक है, तो इट ऑलवेज कीप्स हॉट इन समर. क्या होता है, जब आपकी जो रूफ है अगर वो टिन की बनी होती है तो समर सीज़न में वो और ज़्यादा क्या हो जाता है, उसमें हीट पड़ने की वजह से वो जो टिन होती है वो और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो टिन है या आपकी रूफ है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, कूल नहीं होती. ओके, वो कूल कब होगी? इन विंटर्स. जब टिन में क्या होगी, ठंडक पड़ेगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इट कूल्स डाउन. और इन समर में सन की रेज यानी कि हीट पड़ेगी तो वो क्या होगा, और ज़्यादा टिन गर्म हो जाएगी, ठीक है. सो द आंसर ऑफ दिस इज फॉल्स. ओके. Now with this we have completed our worksheet 5, ठीक है, and in this we have completed 2 exercises. The first one is fill in the blanks, okay, which I have described you briefly, and the second one is true false. That also I have explained nicely. And if you want to see the chapter, again I'm saying, if you want to see the whole chapter, you can see my previous video in my YouTube channel Universal Facts by Vaishali Upadhyay. In that I have explained whole chapter in a nice way, which will help you to do this worksheet as well as to give the exam in a nice way. I hope you have understood this worksheet as well. So now we will meet in our next video with the next worksheet of next chapter. Till then, bye bye. Be safe and healthy at home.